ओके, तो मैं आज एक रिसर्च पेपर पढ़ने जा रहा हूँ। ये पहली बार है कि मैं ढंग से एनालाइज करूँगा रिसर्च पेपर्स को, क्योंकि इसकी ज़रूरत है भाई। रिसर्च पेपर इज़ नथिंग बट सम इंफॉर्मेशन, राइट? कुछ इंसाइट्स मिलेंगी, क्या हो रहा है, कैसे सिस्टमेटिकली हम एक्सप्लोर कर सकते हैं किसी भी चीज़ को और डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारा दिमाग भूल जाता है ना सब चीज़ को, तो अच्छे से उसको डॉक्यूमेंट करना इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। तो चलो, मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया है। ये है रिसर्च पेपर का टाइटल, एक्सपीरियंस एंड एविडेंस आर द आईज ऑफ एन एक्सीलेंट समराइजर टुवर्ड्स नॉलेज इन्फ्यूज्ड मल्टी मॉडल क्लिनिकल कन्वर्सेशन समराइजेशन। तो सिंपली ये है तुम्हारा क्लिनिकल कन्वर्सेशन समराइजेशन, ठीक है? तो उसके लिए मल्टी मॉडल क्लिनिकल कन्वर्सेशन समराइजेशन। तो मल्टी मॉडल मीन्स, यहाँ पे मैंने देखा है कि मल्टी मॉडल फ्रेमवर्क वर्ड का यूज़ हुआ है, तो मैंने पूछा जेमिनाई से। इट्स अ वेरी गुड टूल। मैं साइड में पूछ भी सकता हूँ, देखो व्हाट इज़ मल्टी मॉडल फ्रेमवर्क। तो इसने मेरे को बताया कि मल्टी मॉडल रिफर्स टू टाइप्स ऑफ डेटा लाइक टेक्स्ट, इमेज एक्सेट्रा। तो मल्टी मॉडल मीन्स अलग अलग टाइप मॉडल टाइप को डिनोट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, वो चीज़। फॉर क्लिनिकल कन्वर्सेशन समराइजेशन जनरेशन। तो क्लिनिकल कन्वर्सेशन स्पेसिफिकली हम इसकी बात कर रहे हैं कि क्लिनिकल कन्वर्सेशन हो रही है लेट्स से, और उसको समराइज करने का, ये करने के ऊपर एक रिसर्च पेपर है, राइट? एंड इट इनकॉर्पोरेट्स विजुअल एंड टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन। सो दो मॉडल्स हैं यहाँ पे, visual and textual information with knowledge infusion and adapter mechanism. Now I have to see what is knowledge infusion. What is knowledge infusion? देखो, मैं एकदम नया हूँ तो मैं भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ यहाँ पे। In the context of MMCLI consummation framework, you are looking at knowledge infusion is the process. अच्छा, so this is what I'm looking at. Knowledge infusion is a process of feeding the AI model specialized real world. अब देखो, मॉडल में वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, मोडाल है, राइट? सो हैव टू से इट लाइक मोडाल, MODAL। और मॉडल यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है दूसरा, AI मॉडल। ये दोनों अलग चीजें हैं, राइट? मोडाल और मॉडल अलग चीजें हैं, उसको पढ़ना अलग तरीके से। मोडाल, मल्टी मोडाल फ्रेमवर्क एंड मॉडल। नॉलेज इन्फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ फीडिंग द AI मॉडल। रुको, मैं एक और यहाँ पे चीज़ को इनेबल कर देता हूँ जिससे मेरे को बहुत हेल्प होगा, पता है? देखो, यहाँ पे मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो मेरा कर्सर कहाँ जा रहा है ना, वो भी दिखने लगेगा, और इससे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ मेरी नज़र है, कहाँ कहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ। द प्रोसेस ऑफ फीडिंग द AI मॉडल स्पेशलाइज्ड real world medicine expertise that it didn't learn from just reading the conversation transcripts or looking at the images. So knowledge infusion is the process of feeding AI models specialized real world medical expertise that it didn't learn from just reading the conversation transcripts. Think of it as giving a general purpose AI a medical textbook to reference while it works. ओके, सो नॉलेज इन्फ्यूजन इज समथिंग लाइक, हमारे पास एक जनरल पर्पस एआई है और उसको हम स्पेसिफिक नॉलेज दे रहे हैं जो कि है मेडिकल टेक्स्ट बुक। सो दैट इज वी आर इन्फ्यूजिंग द नॉलेज, राइट? इन्फ्यूजिंग मीन्स जोड़ना होता है, आई गेस। इन्फ्यूजन मीनिंग, so infusion is the act of adding something to something else in order to make it stronger or more successful, right? So we have our AI model, which is, in case we are thinking of it as a general purpose AI model, and we are infusing, we are adding knowledge to it.
right? We are adding something to it. That is knowledge infusion, or knowledge is medical knowledge, right? And adapter mechanism. What is adapter mechanism then? Should I read more? Let's read why it is needed. I don't want to go deep into that. I'll read, right? I'll read most of it. So let's see what is adapter adapter मैकेनिज्म. देखो, हमको डेप्थ में वही तभी जाना है जब रिक्वायरमेंट होना. हर टाइम पे डेप्थ में नहीं जा सकते हम. इतना इंफॉर्मेशन अभी ले रहे हैं जितना हमको कॉम्प्रहेंड करने में इजी पड़े, इजीली हम नेविगेट कर पाए. अभी डेप्थ में जाएंगे धीरे सा, ठीक है. In the MMCLI, so this is the framework, an adapter mechanism acts as a lightweight modular bridge that allows the AI to learn new specialized skills like understanding medical terminology or processing images without having to retain the entire massive underlying model. Think of it like adding a specialized plugin or a translation layer to machine that already knows how to speak general English. Specialized plugin on a translation layer to the machine that already speaks general English. How it functions in the paper. Typically, if you want a large AI model to understand a new domain like clinical medicine, you would have to fine tune the whole thing, which is incredibly slow and expensive. The adapter changes this by staying frozen. The core parameters of the large pre-trained model, the brain, remain unchanged or frozen. Okay, so we are not changing the parameters of the model, right? जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं, हो सकते चाहे GPT ही हो, GPT-4 हो, राइट? कुछ भी मॉडल हो सकता है. हम लामा है और क्या क्या मॉडल्स है ना, ठीक है. क्या कर रहे हैं हम, उसमें कोई पैरामीटर्स में चेंज नहीं कर रहा है. तो बेसिक्स तो मेरे को पता है कि पैरामीटर्स में चेंज नहीं कर रहे हैं. इसका मतलब है कि हम न्यूरल नेटवर्क से उसको वो करते हैं ना. मेरे पास है क्या उसके नोट्स, मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ यार, जो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सीखा है ना ये चीज़. मैंने यहाँ पे सेल्फ स्टडी में देखा था, शायद कहीं पे होगा. नहीं, यहाँ नहीं है ये, इसमें होगा, कोडिंग वाले में होगा. कहाँ पे देखा था मैंने? AIML डीप लर्निंग. या डीप लर्निंग में हमको पता चला था कि पैरामीटर्स चेंज करते हैं हम. तो लेट्स सी मैं क्या किस चीज़ की बात कर रहा हूँ. लेट मी शो यू. So these are the inputs, these are the weights. We apply the function. What is the function? फंक्शन का क्या नाम था? फंक्शन का क्या नाम था यार? So activation function, right? We apply the activation function, we get the output, we map the output. चलो मैं तुमको एक सिंपल सी चीज, तुमको एकदम ज़्यादा इसमें पता नहीं करना, बट एक सिंपल सी चीज़ से इसको समझ सकते हैं. जैसे ये रहा, ये रहा, ठीक है. हमने कुछ इनपुट दिया, यहाँ पे उस पे वेट्स हैं, हमने ये फंक्शन लगाया, यानी कि एक्स है, वेट है, ये वेट से मल्टीप्लाई किया और फिर यहाँ चले गए, ठीक है. तो अब देखो, यहाँ से हम सिंपल क्या कर रहे हैं, ये जा रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन, हम यहाँ पे लगा रहे हैं. हमने दूसरे इनर लेयर पे पहुँच गए, फिर हम आउटर लेयर पे पहुँच गए, यहाँ पे आउटपुट दिया ना. ये वेट्स हैं, उसको एडजस्ट किया जाता है ऑप्टिमाइजेशन के टाइम पे, राइट. एंड लीनियर कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से होता है. वी कैन सी इट एज अ वेक्टर एंड दिस इज ऑल्सो वेक्टर. देखो, इनपुट वेक्टर ये बना दिया x को, -1 2. ओके, हाँ, दीज आर द पैरामीटर्स. ये 1 है, तो हम क्या करेंगे,
1 से 1 का मल्टीप्लाई किया, 3 से -1 का मल्टीप्लाई किया, -2 से 2 का मल्टीप्लाई किया और सबको ऐड कर दिया और हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे पहुँचने के लिए वेट्स और इनपुट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो ये है इस नोड की वैल्यू। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस नोड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वेट्स इनपुट मल्टीप्लाई करके हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये निकल गया। फिर यहाँ से इसकी निकालने के लिए हम भी ऐसे ही कर सकते हैं। ये है हमारा क्लासीफायर। दो क्लासेस हो सकती हैं। लेट्स से यहाँ पे कोई इमेज का इनपुट है और ये है लेट्स से मेल और फीमेल, ये जेंडर क्लासिफिकेशन हो रहा है। तो हम क्लासीफाई कर सकते हैं ना यहाँ पे कि आ गया। तो पैरामीटर्स जो हैं वो हैं ये वेट्स, और देयर आर सम बायसेस आल्सो जिसकी हम बात नहीं करेंगे अभी, तो इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। बट ओवरऑल ओवरव्यू लेने के लिए हम बोल सकते हैं कि ये वेट्स हैं, ये पैरामीटर्स हैं। ठीक है, ये तो कैलकुलेट हो जाएगा ना, ये सभी चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी। ये फ्रेमवर्क है हमारा, ये मॉडल है और ये इनपुट हमको अपने से देना है। इन वेट्स को हम एडजस्ट करेंगे डिपेंडिंग ऑन द आउटपुट। अगर यहाँ पे हमने मेल की इमेज दी और यहाँ पे फीमेल अगर दिखा रहा है तो हम कुछ चेंजेस करेंगे, यहाँ पे हम कुछ ऑप्टिमाइज करेंगे इन वेट्स को। ठीक है, और उस हिसाब से चीज़ें ये मॉडल लर्न करेगा। थोड़ा सा फाइन ट्यून करेंगे हम वेट्स को। तो दैट इज दीज आर द पैरामीटर्स। ठीक है, हम इन पैरामीटर्स को चेंज, तो मॉडल जब एक बार ट्रेन हो चुका है और जब ये करेक्ट आउटपुट देने लगा इन वेट्स को एडजस्ट करने के बाद, तो लेट्स से मेल का हमने इनपुट दिया, यहाँ पे मेल हमको दिख रहा है, फीमेल दिया तो फीमेल हमको आउटपुट दिख रहा है। तो यानी कि ये अब मॉडल ट्रेन करके हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है, हम सेटिस्फाइड हैं कि इतना आउटपुट हमारे लिए सही है। लेट्स से 98% एक्यूरेसी पे हमको मिल रहा है आउटपुट। सो उसके बाद मॉडल ट्रेंड हो चुका है, पैरामीटर्स फ्रोज कर दिए जाएंगे। फ्रोज करने का मतलब ये हुआ कि पैरामीटर्स आर फ्रोजन। ठीक है, पैरामीटर्स आर फ्रोजन यानी कि वो वेट्स अब चेंज नहीं करे जाएंगे। दैट इज व्हाट इट मीन्स, पैरामीटर्स आर फ्रोजन, द ब्रेन रिमेन्स अनचेंज्ड और फ्रोजन। एडिंग a new small layer, the adapter, are inserted into the existing architecture. Only these small layers are trained on the new medical data. So नया मेडिकल डेटा जो आएगा उसमें सिर्फ उस लेयर को, अब कुछ समझ में आ रहा है ना, एक और लेयर से यहाँ पे हम लगा दिए या फिर यहाँ पे कहीं पे लगा दिए, इसके इनपुट के जस्ट बाद पे, राइट, या फिर कहीं पे भी इस आर्किटेक्चर में एक लेयर हम लगा दिए और हम सिर्फ उसी के पैरामीटर्स को चेंज करेंगे, बाकी को चेंज नहीं करेंगे। That's what it's saying. So that is adapter mechanism. उस पैरामीटर को हम इस तरीके से चेंज करेंगे ताकि जो हमारा कन्वर्सेशन समराइजेशन है उसका काम बेटर हो जाए। तो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग मॉडल एक तरीके से समराइज कर ही रहा था, हम उस पर ऐड कर देंगे एक और लेयर ताकि हम उसको बेटर कर पाए। So that's what they are doing here, right? It's an AI generated summary. Wow. Adding small layer, new small. Okay, so that is the adapter, the new layer which जिसकी पैरामीटर्स हम चेंज करेंगे while training the model, right? उसके अलावा बाकी जो भी पैरामीटर्स हैं जो प्री ट्रेन मॉडल पहले से था उसको हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। ओके, तो इसके बाद आता है with the advancement of telemedicine. Now we have to understand what telemedicine is. What is telemedicine? Both researchers and medical practitioners are working hand in hand to develop various techniques to automate various medical operations.
such that diagnosis report generation. Telemedicine is the practice of providing clinical healthcare services remotely using electronic information and telecommunications technologies. Essentially, it allows doctor to diagnose, treat, and monitor a patient without both parties being in the same physical room. While the terms are often used interchangeably, there is a technical distinctions. किसके कौन सा term? Telemedicine or telehealth? Okay. Focuses specifically on clinical services. Example, virtual doctor's appointment. Telehealth, a broader term that includes telemedicine plus non-clinical services like provider training, administrative meetings, and medical education. How telemedicine works? Telemedicine generally falls into three main categories: synchronous, real time, live. Okay, I understand it now. No, I don't have to read all of this, but now I understand what how telemedicine is used. So why we are talking about telemedicine here, right? क्योंकि टेलीमेडिसिन यानी कि हम रिमोटली कम्युनिकेट कर रहा है पेशेंट और डॉक्टर, और रिमोट कम्युनिकेशन में टेक्स्ट के थ्रू, ऑडियो के थ्रू, वीडियो के थ्रू, इन तीन फॉर्म्स में कम्युनिकेशन होगा. नाउ द मॉडल इज ट्राइंग टू summarize the conversations happening between the patient and the doctor or the healthcare provider, right? The doctor, right? और जो भी कॉन्वर्सेशन हो उसको समराइज करके एक क्रिस्प कंसाइज मैनर में इट कैन यू नो प्रोवाइड द समरी ऑफ द कॉन्वर्सेशन, जो कि बाद में जो भी एक्शंस लेने हैं उसमें हेल्प करेगा. जो भी क्रक्स है कॉन्वर्सेशन का उसको निकालने में हेल्प करेगा. सो दैट्स व्हाट they are trying to achieve with this research paper, right? In this research paper, both researchers and medical practitioners are working hand in hand to develop various techniques to automate various medical operations such as diagnosis report generation. Yeah, in this paper we first present a multimodal clinical conversation summary generation task that makes a clinical patient interaction both textual and visual information and generates a succinct synopsis of the conversation. What is succinct synopsis? Let's highlight it. What is succinct? Succinct synopsis of the conversation. A succinct synopsis is a brief, highly concentrated summary that captures the essential point of the larger work without unnecessary details. That's what I was talking about, right? The summary, the concentrated summary with what are the features of the summary? It includes essential points of a very large or larger work, and it does not include unnecessary details. In the context of this framework, it refers to final medical report generated by the AI. Here is the breakdown of what makes a synopsis succinct. This means to the point. It is the opposite of a wordy or rambling transcript. It filters out filler talk like small talks or ums and focuses only on the critical facts. Synopsis, this is condensed version of a narrative. In medicine, it's often called a clinical note or discharge summary. Yeah, discharge summary they give to the patient और देयर फैमिली या फिर जो भी उनके साथ हैं उनको. So here is it's explaining why it matters, right? A typical doctor patient conversation can last 15 to 20 minutes, contain thousands of words. A doctor does not have time to read that entire transcript later, right? The goal of this framework is to turn that long conversation into few bullet points or a short paragraph that covers the chief complaint, why the patient is there, the symptoms,
what the patient is feeling and what the AI saw via the visual modality. Visual modality means the simple video call, right? Diagnosis, next steps, what the doctor recommended. So इसको तीन पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं. पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, सिम्टम क्या दिख रही हैं, पेशेंट क्यों आया वहाँ पे, वाई द पेशेंट और फिर पेशेंट को क्या ज़रूरत महसूस हुई वहाँ पे आने की, सिम्टम क्या दिख रहा है, और फिर डायग्नोसिस या फिर नेक्स्ट स्टेप क्या डॉक्टर ने रिकमेंड किया. आई अंडरस्टैंड इट. Here's the example. So I've been feeling like feeling this kind of sharp pain in my left arm mostly when I lift things, maybe for about 3 days now, and it's worsened in the morning. Such synopsis: patient reports acute sharp pain in the left upper extremity during exertion persisting for 72 hours. Symptoms: most severe AM. Now what here the synopsis is doing, क्योंकि synopsis के पास है कि हम जनरल टर्म में जो भी बातें कर रहे हैं हमने उसको मेडिकल इंफॉर्मेशन पे ट्रेन किया है ना, तो मेडिकल टेक्स्ट बुक्स पे ट्रेन किया है. एंड आई एम श्योर दैट देयर वहाँ पे होगा कि कैसे हम मेडिकल टर्म्स क्या होते हैं इन सभी सिम्टम्स के लिए. जैसे इसने बोला कि शार्प पेन इन लेफ्ट आर्म मोस्टली व्हेन लिफ्ट थिंग्स, तो लिफ्ट करते समय कौन सी मसल्स इंगेज होती हैं, right? Maybe about 3 days now. 3 days is 72 hours, so it's quantifying and it's using medical terms and proper medical terms to summarize what is being said in this transcript, right? We propose a knowledge infused multimodal. Okay, so we've talked about it. No, we haven't talked about it. So we propose a knowledge infused. So knowledge infused means we are, I understand it, right? Modal multitasking, medical domain identification, and clinical conversation summaries and generation. What is multitasking medical domain identification? Let's highlight it. Multimodal, I understand it. Clinical conversation summaries and generation, I also understand it. I'm not able to understand this thing. What is multitasking medical domain identification? What is multitasking medical domain identification? So multimodal clinical conversation summation, that is the name, right? And framework, this is the name of the framework. It leverages an adapter to infuse knowledge and visual features and unify the fused feature vector into a gated mechanism. What is a gated mechanism here? I understood what is adapter to infuse knowledge and visual features, right? So we're training, right? Training the model on different textual data and visual information. And while training that model, will use that adapter. Will only change the parameters of that adapter or the intermediate or extra inner layer, and will not change any other parameters. Unify the fused feature vector using a gated mechanism. Furthermore, we developed a multimodal, multi-intent clinical conversation summarization corpus annotated with the intent, symptom, and summary. Yeah, we've talked about it earlier here. And the extensive set of experiments, both quantitatively and qualitatively, led to the following findings: the critical significance of visuals, more precise and medical entity preserving summary with additional knowledge infusion, a correlation between medical department in department identification and clinical hypnosis generation.
Furthermore, the dataset and source code are available at, this is the GitHub link where we'll see the uh, dataset, source code, etc. So these are the findings. The experiment has been done quantitatively and qualitatively. I don't know how they are measuring the quality here. Quality will be based on the output, right? How accurate it is able to summarize, how accurately it's able to summarize the conversation, led to the following findings. Critical significance of visuals are very important. They found out that visuals are significant summarizing more precise and medical entity preserving summary with additional knowledge infusion. So okay, so when we infused additional knowledge, like we gave medical textbook to the model and we changed the adapter, right? Adapter parameters, then it led to more precise and medical entity preserving summary. What is medical entity preserving, bro? Let's highlight it. Okay, a correlation between medical department identification and clinical hypnosis generation. So there is a correlation between medical department identification, which I am going to read now. What is medical department of a medical domain identification? Is the secondary goal. The AI works on simultaneously while it summarizes the conversation. Is this just performing one task, summarizing? The model is trained to do two things at once. This multitasking approach makes the AI smarter because two tasks help each other out. So these two tasks help each other out. The medical department identification and clinical hypnosis generation. They both help each other out. So there are two tasks. And multitasking, we are saying multitasking because multitasking is different and medical domain identification is different, right? Multitasking is we are doing two things. We are summarizing the conversation, clinical conversation, and we are also identifying the medical domain. So we are doing two things here instead of just performing one task. Okay, so we read that. What is the medical domain identification? This is the process of AI automatically figuring out which specific medical department or specialty the conversation belongs to, etc. Example: cardiology, oncology, pediatrics, or dermatology. Okay, so it's identifying the domain of the talk, right? Or the conversation. Like किसी को चेहरे की प्रॉब्लम है या फिर स्किन की रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को हो सकता है जॉइंट्स या फिर बोन्स, हड्डी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किसी को मसल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, राइट? किसी को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जिनमें ये जिनको ये एक मॉडल आइडेंटिफाई कर सकता है। ओके, सो दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ दिस research paper, and let's now read the research paper here. Yeah, this is Cornell University में ये वो हुआ है cited। कहाँ पे मैं इसको पढ़ सकता हूँ? I don't know bro, कहाँ से पढ़ते हैं? View archive page, this is the archive page। data set and code are available, okay। We're gonna read the whole paper, I want to read the whole paper। View PDF,
I hope I get the whole paper here. Yeah, I've got it. Okay. So this is the paper. This is how it looks good, bro. It looks structured and looks nice. So this is the title: Abhishek Tiwari, IIT Patna; Anisha Saha, IIT Patna; Sriparna Saha, IIT Patna; Pushpak Bhattacharya, IIT Bombay; Meenakshi Dhar, All India Institute of Medical Sciences, Rishikesh. So these are the people here. Abstract हमने पढ़ लिया है, I guess. हाँ. Okay, so my mom is calling me. यहाँ पे अब हम आगे से चालू करेंगे. मैं आता हूँ. I think I should record another video for this, reading this whole research paper. In this video, what we have found out, we read the abstract, right? We found out the summary. We found that कि multimodal framework क्या होता है. फिर हमने knowledge infusion समझा. हमने समझा कि adaptive क्या होता है. फिर हमने telemedicine समझा कि क्या होता है. It gives us a synopsis जो कि आउटपुट है इस मॉडल का, राइट. फिर हमने समझा कि गेटेड मैकेनिज्म. ओ वी हैवंट अंडरस्टूड गेटेड मैकेनिज्म, राइट. ओ ओ ओ भूल गया था. ठीक है. आई अंडरस्टूड दिस बट आई विल आल्सो हाईलाइट इट. सो चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं काम. गेटेड मैकेनिज्म. व्हाट इज गेटेड मैकेनिज्म? Fused vector. It leverages an adapter to infuse knowledge and visual features and unify the fused feature vector using a gated mechanism. Okay, gated mechanism acts as a smart traffic controller or a filter. Its job is to decide how much importance to give to each stream of information, text, image, and medical knowledge before combining them into a single representation. In a multimodal system, not all data is equally useful at every moment. Yes, it is understandable. For example, if a patient is describing a pain in detail, the text is the most important. If a patient is showing a physical wound to a camera, the visual should take priority. How it works: a gated mechanism uses a mathematical gate using a sigmoid function to assign a weight between 0 and 1 to each data source. Input: it takes the fused feature vectors, the process data coming from adapter layer. Okay. Weighing it, it calculates a great gate value. If the gate of the visual data is 0.8 and the text data is 0.2, the model focuses more on what it sees than what it reads. Unification: this multiplies the data by these weights and sums them up to create unified feature vector. Okay, so it's okay. So gated mechanism is something that prioritize the modality based on importance. Without a gated mechanism, the modal might get confused by conflicting and noisy information. By using this gate, by using this gate, the MMCLI clinical conversation summation framework ensures that the succinct synopsis is based on the most reliable evidence available at the specific point in conversation. So the summary is text plus images from telemedicine session. Then adapter performs knowledge infusion to add medical expertise. Then gated mechanism balances and unifies all these inputs, and output performs multitasking to identify the medical department and write the summary.
So that is the crux or the abstract of this research paper. Medical entity preserving summary with additional knowledge infusion. Okay, nice. So here's what we've understood right so far, कि ये मॉडल है जो इसमें हम जनरल पर्पस प्री ट्रेन्ड मॉडल का यूज़ करते हैं, जिसके पैरामीटर्स को हम फ्रोजन रखते हैं. देन वी यूज़ एन अडेप्टर लेयर, और देन वी इंक्लूड एन अडेप्टर लेयर जो कि नॉलेज इन्फ्यूजन के लिए यूज़ होता है, राइट. एंड देन वी apply a gated mechanism to quantify which modal to give more priority, राइट. अगर टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे. हमको पता नहीं है कि ये हो कैसे रहा है, राइट. वी जस्ट नो दैट दे आर डूइंग दिस. और ये जो फ्रेमवर्क इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज MM, राइट, multimodal clinical conversation summation framework. This does three things, or this does two things. It identifies the domain of the conversation, and second thing, it summarizes the conversation, giving us precise information, that is the intent, what why the patient has come to the doctor. Second is symptoms, what are the symptoms, and third is what is the prescription, or what is the, we'll say, summary of the conversation. What are the next things to do also, right. Let's see. uh, Medical department and write the summary. And summary is to the point, avoiding unnecessary information. So it saves time, it gives precise information, and वहाँ से we can move further with the diagnosis or the treatment. So it's useful. Okay, I think जितना मैं कर सकता था उतना मैंने यहाँ से निकाल लिया है भाई abstract से. In the next session, I will try to understand this. Let's download this paper. Let's put it here. Folder, and we'll name it research, just research. And let's name it. Or what I can do is, I don't want to save it here. What I'll do is I'll create a text file and I'll save the links. Okay, let's write the name of the research paper, which is this. Let's copy this and we'll put the link. पहला लिंक यहाँ, इसका लिंक दे देते हैं.
दूसरा लिंक, इसका लिंक दे देते हैं। Okay, this is done. Nice. So let's end it here.